Okay, welcome back everyone. In the last video, we were actually doing solving some examples और अब हमने last video में minutes को convert किया था seconds में, right? So this is one way that you can do the conversion of minutes into seconds. That we know that 1 minute is equals to 60 seconds. So 2 minutes में कितना होगा? That means हमने 60 को 2 times add कर देना है, ठीक है? And the answer is 120. इसी तरह next हमने देखा कि 3 minutes को seconds में convert करना है, तो हमने क्या किया कि we added 3 60s और 3 times हमने 60 को ऐड किया and we got the answer 180. Okay. Likewise हमें next question क्या बता रहा है कि we have to convert 5 hours into minutes. अच्छा जी, अब हमें देखना ये है कि how many minutes are there in 1 hour. एक hour में कितने minutes होते हैं? तो we learned that in 1 hour there are 60 minutes. ठीक है, तो 5 hours में कितने minutes होंगे? हमें क्या करना है कि we are going to multiply 5 with 60 or we can also add 60 5 times. ये दो काम हम कर सकते हैं, या तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60 के साथ ताकि हम इजीली मिनट्स कन्वर्ट कर सकें, या हम इनको 5 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बिगर यूनिट को, ठीक है, अगर आप बिगर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो स्मॉलर यूनिट में, ठीक है, तो वी ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन. हम क्या करते हैं? हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. इधर मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है. बट इफ वी आर कन्वर्टिंग स्मॉलेस्ट यूनिट, अ स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट, ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि अगर हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड द नंबर. हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नंबर से. बिगर को स्मॉलर में करने के लिए वी मल्टीप्लाई एंड फॉर स्मॉलर टू बिगर वी डू डिवीजन, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल 5 आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में. वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. आवर्स जो हैं वो मिनट से बड़े होते हैं. सो हम क्या करेंगे? हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. लेट्स डू इट ओवर हियर. आइदर यू कैन डू दिस थिंग कि आप मल्टीप्लाई कर दो, या आप एडिशन भी कर सकते हो. बोथ आर फाइन. they're gonna give you the same answer, ठीक है. but for this example I'm using the method of multiplication, ठीक है. we are gonna write 60 over here, 5 over here, and let's do the multiplication. 5 0 times is 0, and 5 6 what is 5 6 yes, that's right, 5 6 30. So the answer over here is 30. That is 300 minutes. In 5 hours, how many minutes are there? There are 300 minutes in 5 hours. Moving on to the next example, that is 7 weeks. ठीक है, 7 weeks में कितने days होते हैं? Remember we learned that in 1 week we have how many days? We have 7 days. ठीक है ना? तो now we have a bigger unit over here, right? And we have to convert it into the smaller unit. तो हम कौन सा वाला method use करेंगे? We are going to use this method. That is, we are going to multiply. हम 7 को किससे multiply करेंगे? We are going to multiply 7 with 7. Let's do it over here. 7 multiplied by 7. And what is 7 multiplied by 7? That is 49. So this is how you are going to do the multiplication part. One more thing I would suggest is कि आप लोग इसको रिवाइज करना भी स्टार्ट कर दें टेबल्स को, ताकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी मतलब आपके लिए हो. 3 years into months. हमने अब इस क्वेश्चन को करना है. रिमेंबर वी डिस्कस्ड एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं जी. थिंक ऑफ इट इन योर माइंड. Yes, and that is 1 year has 12 months.
तो हमारे पास 12 एक फिगर आ गया है और हमें अब क्या करना है कि बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है. We will do the same method and that is multiplication. We're going to multiply 3 with 12. Let's do the rough work over here. 12, 3 multiply 3 twos are 6 and 3 ones are 3. So the answer is 36. There are 36 months in 3 years. Okay. Moving on to the next part and that is 2 days. 2 days में कितने hours होते हैं? So we are going to do this thing कि days जो है is a bigger unit and hours is a smaller unit. तो हम 2 days को convert करेंगे hours में and we know that 1 a day is equals to how many hours? It's actually equals to 24 hours. So what we have to do right now is that we are going to multiply 24 with 2 and let's do the ref work over here. 24 multiplied by 2. 2 4s are 8. 2 2s are 4. Answer is 48. That means in 2 days we have 48 hours. In this question we only use the bigger unit converting into the smaller unit. That is, we only did the multiplication part. But in further coming videos, we are going to do the other thing as well, in which we are going to use the smaller unit and convert it into the bigger unit. And in that video, we are going to be using the division part. But for the meantime, what I want you guys to do is to revise your tables. ठीक है, आप क्या करें कि आप अपने tables revise करें 1 से लेकर 10 तक. ठीक है, and this is considered as your homework because in the next videos we will be doing a lot of multiplication and a lot of division. So if you don't know the tables, it will be difficult for you to understand them. See you guys in the next video.